So the people who are rich, are their brains wired differently from those who are not? Brain can adapt to anything. People are born in the worst of conditions, being very successful people. डॉक्टर सिड वॉरियर एक न्यूरोलॉजिस्ट, एजुकेटर और इंडिया के सबसे फॉलो किए गए साइंस कम्युनिकेटर्स में से एक। इस पॉडकास्ट में समझने वाले हैं कि कैसे डोपामीन को कंट्रोल करके डिसिप्लिन और फोकस हैक से आप 90% लोगों से आगे निकल सकते हो। डोपामीन एडिक्शन क्या होता है? हाउ डू यू डील विद दैट? नॉरएड्रेनालिन केमिकल जिससे हमारा फोकस होता है। अगर NE बहुत कम है, नॉरएपिनेफ्रिन बहुत कम है, तो मतलब आप बोर हो रहे हैं, कुछ भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। अगर NE थोड़ा बढ़ रहा है तो मतलब अटेंशन धीरे धीरे फोकस हो रहा है। एंड इफ इट कीप्स इंक्रीजिंग दैट मींस यू आर गोइंग इनटू एंजाइटी। बढ़ते गया तो पैनिक अटैक। One of the biggest hopes is money manifestation. क्या अपने ब्रेन को आप affirmations के थ्रू रिवायर कर सकते हैं? So if you say that I'm somebody who has $1 million, and because the brain is so capable of believing anything, you should use this technique. Do we actually use 10% of our brain? Is it possible to use more of our brain? So welcome Dr. Sid. बहुत excited हूँ आज की conversation के लिए. You know, over the years I've worked with a lot of students, बहुत बच्चों से बात की है, and there's certain facets that keep coming up again and again, and I always wonder कि ये जो आज के हमारी circumstances है, and how is really our brain responding to that? How much is our brain responsible for our success, for our failures, और कितना हम उसको manage और control कर सकते हैं? And I would love to understand from you, you know, the details or the science behind a lot of this. चालू करना चाहूँगी मैं from the basis of intelligence, right? I think traditionally बोलें तो आपकी intelligence was defined very black and white. आपने 10th में क्या मार्क्स आए, 12th में क्या मार्क्स आए, आपका IQ टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं. In today's day and age, is that still a good metric for intelligence? Short answer is no. क्योंकि पहले वो metrics हम मानते थे क्योंकि there was only one way to get a good score, which is to understand a subject, learn it और उसको reproduce करना question answer form में. But आज के ज़माने में with the kind of information that we have accessible on our phones और अभी तो AI के ज़माने में it is possible for an unintelligent person to replicate an answer which sounds intelligent. So that metric is no longer a good metric for intelligence. Basically intelligence का मतलब क्या होता है कि do you have the capacity to break down a subject, understand it and use it when required. Interesting. ये पूरा जब होगा तब हम इंटेलिजेंस मानते हैं. तो अगर आपने मुझे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका जवाब दिया, क्या आप वो जवाब को समझ पाओगे, इंटीग्रेट कर पाओगे अपने लाइफ में, और जब नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आए जब ये आंसर का यूज़ करने का अपॉर्चुनिटी मिला, कैन यू यूज़ इट? अगर ये तीनों टिक मार्क हुआ तो यू आर इंटेलिजेंट. सो द प्राइमरी role I think of parents and teachers now is to make children intelligent. We have to make sure कि they have the capacity to learn, to understand and then to use. ये तीनों होना चाहिए. So simply reproducing कि जो पहले rote learning होता था कि हमने आंसर लिख लिया और उसको reproduce कर दिया, that doesn't work. That doesn't work anymore. So how do you measure this intelligence? You know, how do you really measure कि मैंने इसको absorb किया, understand किया, reproduce किया? What according to you would be a good metric to study this? So going into the future, there should be more and more practical tests of intelligence. So if somebody is given something to write, पहले कैसा होता था? The way that students were measured were against each other. And because we wanted to make sure कि 100 students का answers हम 1 घंटे में check करके उनको pass करवाए, that was the main goal. Right. The focus was not on whether each individual child was learning or not. So I'm not saying कि ये overnight होगा, but in an ideal situation, हर एक child का intelligence का जो journey है वो individualized होना चाहिए. क्योंकि suppose if I am a 10-year-old boy
there are some things जो मुझे समझ में आता है, some things which I don't understand. So the teacher will now need to personalize the questions for me. They will need to personalize the tasks that I have to do, and then check if am I able to do this better than what I was doing. My competition is only with myself. So very interestingly, I was talking to a startup company in the US which is using AI to do this. Beautiful. Because AI can personalize questions for students much better than teachers can, क्योंकि teachers के पास उतना bandwidth नहीं है और हमारे पास उतने teachers नहीं है. So in an optimistic twist, I feel कि while AI can create a lot of problems, AI can also come up with a lot of solutions. So this is one of the brighter futures that I'm hoping will happen. No, and it's lovely. I think what you're saying also, Dr. Sid, is अभी तक जो हमारा mindset रहा है and जो हम शायद इतने सालों से जीते आए हैं, was this scarcity mindset जहाँ पे हर चीज़ की कमी थी, तो हम हर चीज़ के लिए compete कर रहे थे. In today's day and age, and I think आज के दिन it's more about collaboration. मतलब एक YouTube स्टार नहीं होएगा. You can have 1 million people with 1 million followers. एक के पास ज़्यादा मिल रहा है तो दूसरे की कमी नहीं हो रही है. And maybe that mindset of collaboration versus competition जो हमने, what you're saying कि we were always competing, and we need to now be collaborating. Beautiful. But from the brain's perspective, एक आ गया intelligence. अगर आप रियल लाइफ सक्सेस की बात करें, आप किसी इंडिविजुअल की बात करें, किसी 20-25 ईयर ओल्ड की बात करें जो जेन्युइनली सक्सेसफुल है, एंड व्हेन आई से सक्सेसफुल आई मीन good relationship or earning money, doing well, like financial material success, तो उसमें इंटेलिजेंस का कितना रोल होता है एंड और क्या फैक्टर्स हैं दैट प्ले एन इंटेग्रल रोल? Intelligence is one of the most important things. It is one of the most important. Yes, because if you don't have that, if you don't have the ability to take new information, अगर हम नया चीज़ सीख ही नहीं पाए तो ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही है कि जो प्रॉब्लम मुझे पहले डिफिकल्ट लग रहा था अब मुझे डिफिकल्ट नहीं लग रहा है. दैट इज ग्रोथ इन अ नटशेल. और वो ग्रोथ का डेफिनेशन आप किसी भी डोमेन में अप्लाई कर सकते हो. तो प्रोफेशनल ग्रोथ इज कि जो प्रोजेक्ट आपको लास्ट ईयर डिफिकल्ट लग रहा था अभी इजी लग रहा है, मतलब यू हैव ग्रोन प्रोफेशनली. अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हो, अगर आप प्यार में हो, तो जो आर्ग्यूमेंट पहले हमें 1 हफ्ता लगता था सॉल्व करने को अभी 1 मिनट में सॉल्व हो गया. दैट मीन्स योर रिलेशनशिप हैज ग्रोन, राइट? सो ग्रोथ इज डिफाइंड बाय द एफर्ट इट टेक्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, है ना? तो आवर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग बिकॉज इट इज इंटेलिजेंट इनफ. और इसीलिए अलग अलग टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस डिफाइन किया जाता है कि आर यू इमोशनल इंटेलिजेंट, आर यू intelligent in mathematics, there is some physical intelligence, sports intelligence. But common definition is this: are you able to learn so that that problem can be solved more easily? Intelligence तो चाहिए ही. The other important thing is resilience. Resilience का मतलब है कि सपोज आपने कुछ अटेम्प्ट किया और आप फेल हुए, तो वो फेलियर से आप कितना जल्दी रिकवर कर पाओगे, दैट इज़ रेजिलियंस. और अगर आपका रेजिलियंस बहुत कम है तो फेलियर से आप पूरा कोलैप्स हो जाओगे और आप रिकवर नहीं कर पाओगे, मतलब यू विल नॉट गेट बैक इनटू द प्लेइंग फील्ड. सो इंटेलिजेंस प्लस रेजिलियंस इज अ गुड रेसिपी फॉर सक्सेस. And that is something that you've seen or you feel. And how do you build resilience? Now there are multiple things. Resilience basically क्या है? ब्रेन को लगता है कि मुझे हमेशा सक्सेसफुल होना है, राइट? क्योंकि सक्सेस का मतलब है सर्वाइवल. इन इट्स एसेंस, इफ यू फेल, ब्रेन का सबसे बड़ा फियर है कि तुम मर जाओगे. सो वेन एवर यू आर सक्सेसफुल इन समथिंग, द ब्रेन रिवॉर्ड्स यू विथ डोपामिन. एक केमिकल है ब्रेन में. तो जब भी आप सक्सेसफुल हो तो ब्रेन बोलता है कि चलो ये लो डोपामिन, खुश रहो, कीप डूइंग दिस मोर एंड मोर. Versus every time you fail, the brain punishes you by giving you a dopamine negative spike.
तो डोपामिन गिर जाता है, तो यू एक्सपीरियंस दैट एज रिग्रेट या गिल्ट या सैडनेस. तो योर ब्रेन वांट्स टू अवॉइड दैट at any cost. Now the problem is, if we are so committed to only getting dopamine spikes, you will do everything in your power to avoid a dopamine crash. So then you will say कि मुझे risk ही नहीं लेना है. So to offset that, the brain has come up with another network where risk taking gives you extra dopamine spike. तो ये Wow. पूरा एक नेटवर्क बना के रखा है एवोल्यूशन ने Wow. टू मेक श्योर दैट एनिमल्स टेक दैट रिस्क. Because you're getting a greater ग्रेटर डोपामिन. which is why like आप casino में जाते हो तो you'll bet more क्योंकि you're Yes. winning more and you're Yes. getting that spike back. करेक्ट. तो अगर कंसिस्टेंटली मैं आपको रोज आके मैं आपको 100 रुपीज दूँ तो आपको छोटा छोटा डोपामिन स्पाइक मिलेगा. बट इफ आई से कि आप ये डाइस रोल करो, अगर इवन नंबर आ गया तो मैं 10,000 दूंगा, ऑड नंबर आ गया तो मैं आपसे 1,000 ले लूंगा. नाउ यू आर गैम्बलिंग, आप एक रिस्क ले रहे हो, बट उससे आपका डोपामिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है. एंड दैट इज हाउ यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली. एंड एवोल्यूशन वांट्स यू टू डू दिस. एवोल्यूशन वांट्स यू टू टेक अ रिस्क. Amazing. सो जब आप वो चेज करते हो, यू आर चेजिंग दैट रिस्क, देन यू आर ऑल्सो सेइंग कि I am willing to take that chance of failure in order to get this extra dopamine spike. This is a game. Our brain looks at it like a game कि मैं कैसे खेलूँ इसके साथ. हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि ये एक गेम है और हम उसे बहुत बहुत सीरियसली ले लेते हैं. इतना तक कि हम बोलते हैं कि मुझे फेलियर टॉलरेबल ही नहीं है, तो I will not take that risk. And that is when stagnation happens. So the way to build resilience is to convert it into a game. तो जो भी आपको करना है, आपको दोबारा उसे एक गेम बनाना है. And you have to say कि मुझे इतना फेलियर मैं टॉलरेट कर लूँगा in order to get this much reward. And then when you start playing, you will keep growing. अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बोलना है कि गेम का डिफिकल्टी लेवल होता है. हर एक गेम का डिफिकल्टी लेवल होता है. तो अगर समझो आप बार बार गेम खेल रहे हो और आप बार बार हार रहे हो, जस्ट एक्सेप्ट कि शायद आपने डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई रखा है. Maybe I need to go to a lower level. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट कीप ट्राइंग एंड फेलिंग, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा रिसोर्सेज खत्म हो जाता है. या तो टाइम या मनी या एफर्ट या सेल्फ वर्थ सब खत्म हो जाता है. तो रादर देन गिविंग अप कंप्लीटली, just reduce the difficulty level, come back to a level which is more at where you are comfortable, and then start playing. Don't stop playing the game. Change the difficulty level. I just love this, and I was एक Andrew Huberman का podcast था, and he'd spoken about dopamine, and he said कि जिस body में dopamine नहीं हो या human being में dopamine नहीं हो, that's almost like a dead body, right? आपको growth के लिए dopamine चाहिए, but I think you've explained it so beautifully कि हम या तो इतना chase करते हैं dopamine को कि हम addicted हो जाते हैं, या फिर हम बिल्कुल उसको छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, कोई रिस्क भी नहीं लेना है. एंड बट हाउ so I think what you're saying is dopamine balance करना बहुत important है हमारे को. Yes. कि understand करना कि हाँ वो because a lot of times when I'll talk, doctor said people will be like, oh, don't chase dopamine, you should run after serotonin, right? कि do pleasurable activities, आप बहुत ज़्यादा high risk या इसके पीछे मत जाओ. But I think what you're saying is that is also very important and integral. Absolutely, क्योंकि dopamine is not the enemy. हमारा understanding of dopamine is what is wrong. हमें लगता है कि dopamine is the end goal, but dopamine was never meant to be the end goal. Dopamine was supposed to be the accelerator. जो गाड़ी में accelerator होता है, वो press करना is dopamine, but the purpose of driving a car is not to press the accelerator. The purpose of driving a car is to get to your journey, is to get to your destination.
जी। सो हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम अभी इस वक्त ऐसा है कि वी आर बीइंग सोल्ड द प्रेसिंग ऑफ द एक्सेलरेटर एज द फाइनल गोल. प्रोडक्ट, राइट। So dopamine is not the final goal. Dopamine is the means to an end. And that end is associated with other hormones like serotonin. So that's why people say कि you should go after serotonin. But the way to go after serotonin is through dopamine. अगर dopamine नहीं है तो गाड़ी आगे ही नहीं चलेगी. तब आप वहीं पे रुक जाओगे। Correct. और ये डोपामिन एडिक्शन क्या होता है, उससे कैसे, लाइक वो क्या, हाउ डू यू डील विद दैट? So dopamine addiction is an addiction to pressing the accelerator. तो समझो आप गाड़ी चला रहे हो और आपका सारा मजा आ रहा है सिर्फ एक्सेलेरेटर दबाने में. लाइक ज़ूम ज़ूम Zoom, ज़ूम zoom, ज़ूम, zoom. राइट। तो 1 घंटे के बाद भी आप देखोगे तो आप वहीं पे घूम रहे हो. सो एक्सीलेटर दबाना इज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट आर यू ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन द रोड. राइट, कि आप इतना एक्सीलेटर दबा रहे हो, आर यू गोइंग समवेयर? राइट। इफ यू आर नॉट, देन यू आर ओनली प्रेसिंग द एक्सेलरेटर एंड फिर गाड़ी खराब हो जाएगी. सो anything that gives you a dopamine spike, if it is in a direction, you will get somewhere. But if you find yourself in the same place after that dopamine spike, that is an addiction. Beautiful. So if you're playing a sport or if you're playing a game जिसमें आप इम्प्रूव कर रहे हो, रनिंग योर बिजनेस जिसमें आप इम्प्रूव कर रहे हो, दैट्स ग्रोथ। That's growth. बट अगर आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो या एक गेम के पीछे एक ही जगह पे वो करे जा रहे हो, दैट्स एन एडिक्शन। That's an addiction. Is there any measurable change in you after that dopamine spike? So for example, if I go for a run, मुझे उससे बहुत अच्छा लगा. What is the measurable difference? कि next time I go for a run, I am able to run for 5 minutes longer without getting tired. That is a measurable benefit that I have. That means that the earlier dopamine spike helps me. I am growing. But मैंने एक बर्गर खाया आज, मुझे डोपामिन स्पाइक मिला. अगले हफ्ते मैंने बर्गर खाया, क्या पिछले बार बर्गर खाने से मुझे कुछ भी मेजरेबल ग्रोथ हुआ है? अगर नहीं है, then that means that dopamine spike was a waste. Right. मतलब that was just in the moment, right? So But if you were rewarding yourself with a burger because I completed a task well, and उसके वजह से I worked a little bit harder, yes, then that's growth. that's growth. That's growth, absolutely. जैसे suppose if I go for a techno event and with my friends and I have a great time, बहुत dopamine मिला मुझे, I come back. I have the memory of that event. My friendship has grown stronger. I feel better about myself. Now I can go and do my work better. मेरा जो खुद का internal story है मेरे बारे में, वो better हुआ है. Right. Great. Go for it. So all dopamine spikes, they're not bad. Right. But is it adding up to a larger story? Then that is what dopamine is meant for. And you said a beautiful word कि मेरी इंटरनल स्टोरी क्या है, राइट? मैंने अपने आप को बोला, मैंने ये किया, आई वर्क रियली हार्ड, मैं अपने लिए आई हैव गॉन फॉर दिस हॉलीडे, दिस वेकेशन, यू नो. एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को भी बोल रहे हैं दैट वी आर ग्रोइंग. अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारा इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है लाइफ में कि वी नीड टू सेट इंटरनल टारगेट्स, रिवॉर्ड आवर सेल्फ फॉर थिंग्स डन टू मूव फॉरवर्ड. काफ़ी टाइम हम वी गेट स्टक इन दिस होल स्पायरल जहाँ पे हम नेगेटिविटी में ज़्यादा स्पाइरल डाउन कर देते हैं वर्सेस क्रिएटिंग दीज लिटिल माइलस्टोन्स दैट हेल्प यू मूव फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली. और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब डोपामिन कम है हमारे ब्रेन में तो ऑटोमेटिकली हम एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं. और जब हम नेगेटिव स्पाइरल में होते हैं तो इफ़ यू लुक एट योर लाइफ यू ओनली सी नेगेटिव थिंग्स. तो सपोज अगर इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है और अभी मैं ये टेबल पे देखूंगा तो मुझे पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखेगी. तो आई विल, इफ़ आई एम इन अ वेरी पैरानॉइड स्टेट, मैं सोचूंगा कि अरे ये इलेक्ट्रिक वायर है, क्या टच करने से मुझे शॉक लगेगा, अरे गर्म कॉफ़ी है, क्या गिरेगा. आई विल ओनली सी ऑल द थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग.
आपने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखा है Yeah, ना, yeah, वो वाला yeah, कि अरे इससे ये हो सकता है, इससे Yeah, ये हो सकता yeah. है, इट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफाइजिंग. right. तो जब हम नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो कैटास्ट्रोफाइज करते हैं. आवर ब्रेन विल कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट नेगेटिव आइडियाज इनटू द फ्यूचर, और Right. फिर वही दिखेगा. विच इज़ वाई पॉजिटिव थिंकिंग इज एन एक्ट ऑफ रेबेलियन. जैसे आपको फोर्स करके देखना होगा कि अच्छा, राइट 5 थिंग्स दैट वेंट वेल दिस Right. वीक, and don't stop thinking until you can find 5 things. तो if you force it out, then you start looking at it कि अरे हाँ यार, मतलब लाइफ इतना भी खराब नहीं था, it was just that I was not seeing it. I wasn't saying that. No, sorry, and this is such a beautiful thing that you've talked about is कि this concept of fear, right? कि brain fear project करता है. So Dr. Sid, इससे पहले we've done a lot of sort of talks, and one of the huge topics that we've spoken about is manifestation. And manifestation, we've talked about the power of positive thinking. And you know, as an entrepreneur, as a business person, तो जब हमने पहली बार manifestation के बारे में बात किया, तो I sort of took it with the sense of disbelief कि यार wishful thinking से कैसे हो सकता है. But a lot of our experts talk about how जब आप एक पॉजिटिव थॉट इम्प्लांट करते हो अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, उसको अफर्म करते हो, सो योर ब्रेन, योर थॉट्स क्रिएट अ रियलिटी, राइट? सो न्यूरोलॉजिकली व्हाट डू यू बिलीव कि अगर आप पॉजिटिव थॉट्स इम्प्लांट करते हैं, डज दैट क्रिएट रियलिटी, और आर यू, I mean, and that's the second part of it, or are you fooling yourself from the dangers that are present? So both of these things can happen depending on how you do this. Okay. जो भी आपको करना है, आपको एफर्ट तो डालना ही है, right? So suppose if you say that you want to become a successful entrepreneur, you still have to show up to work, work on your idea, pitch to people, make sales, improve your product. वो सब तो करना ही है. But बीच में there will be moments where you doubt yourself, where you think कि क्या ये होगा, नहीं होगा. There are certain moments where you feel like quitting. ये inevitable है. The most successful startup founders have gone through those moments, right? So in those moments, if you have hope, that hope gives you resilience. That hope helps you get through that low moment and then come back and start again. वो hope बहुत important है, and that hope will only come if you have a positive vision of the future. If you don't have that positive vision of the future, you are more likely to give up, because why would you do it? Right? It has to be logical. Resilience has to be logical. It cannot be blind. It has to make sense for your brain. You need to For believe your it. brain, Right. yes. So for you to keep putting in hard work, you have to somewhere believe that all this hard work will someday benefit me. So there is this study of rats being drowned in water, where they showed that if you put a rat in water, the rat will try to swim for around 7 to 8 hours before drowning. But some of the rats, they pulled out just before they drowned, warmed them up, gave them some food, and then they put them back in the water, and now they kept swimming for 3 days. Wow. Because the last time they were almost drowning, somebody saved them, so now they have hope कि कोई और कि बचा कोई लेगा. आएगा बचाने को. So they have the capacity to swim for 3 days. It's a very dark study, but it shows a lot about how the brain works. Right. If you have hope, you will have so much more resources to keep fighting. Which, if that hope is not there, you will give up. Right? So this is where religion and all plays a big role. Like I always think, will humanity have survived if we did not have the concept of religion? Right. Kyunki I'm pretty sure in the last 50,000 years, there must have been many moments where humanity was just utterly without hope, Right. except for God. I Right? mean, times of COVID, Dr. Sid, कि जब इतना bleak था, आप कमरे में बंद थे, कुछ, you had your near and dear ones dying. Yeah. उसमें बस एक ही था कि, कोई है जो. Yeah.
एंड ये तो कोविड की बात आप कर रहे हो, दैट इज स्टिल विथ हाइट ऑफ टेक्नोलॉजी. We were still able to do Skype. We were still able to do Zoom calls, right? We still had Wi-Fi. Imagine 10,000 years ago or 25,000 years ago when we were in caves, or somebody is dying and you don't even know what is happening. हमको पता ही नहीं है इन्फेक्शन क्या होता है, हमको मलेरिया क्या है पता नहीं है, लाइटनिंग आ रहा है कोई मर गया. In those moments, how do you cope? Just imagine, because those people were not different from us. Same brain, exact same brain. How do they cope? How do they get up and continue working? How do they keep farming? कुछ तो चाहिए ना, hope चाहिए. So then you have this whole thing of नहीं हमें ये करना है, भगवान ने बोला है करना चाहिए. Anything, it doesn't matter, real or not, doesn't matter. As long as you have hope, you will keep doing. And because they did it, we are here. And can affirmations rewire your brain or your belief system? मतलब I'll talk from a perspective कि अगर आप manifestation की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसको manifestation का right one of the biggest hopes is money manifestation. But at the other end people feel कि oh we don't deserve it या you know we don't really deserve the money. क्या अपने brain को आप affirmations के through rewire कर सकते हैं, अपने beliefs को rewire कर सकते हैं into believing in yourself? So you can rewire yourself to believe in anything. The human brain has the capacity to believe in anything. Yeah. As long as that belief is grounded in some reality, we think it's normal. If it is outside of reality, we think it's psychosis. There are people who think they can fly, but we call them mad. But the brain is capable of believing in anything. Anything. Now, there are some beliefs that will help us go through life better. Like, I believe that society is kind, that nobody outside will come and stab me. Like, that's a belief that I have. So that is what allows me to go out not being scared for my life, right? So these are beliefs that you have. Now, suppose if you have difficulty in going through your day, if you can change that belief that things are going to be good, it will change your behavior. So affirmation essentially is repeating a line in your head again and again until you start believing in it. Now, I have experienced this when I took an acting class. Okay. So I was given a role and वो role के बारे में मुझे पूरा लिखने को बोला. The coach told me to write about the whole character. And he told me to come up with one line that summarizes that character's intention. What is that character feeling? And वो line मुझे बार repeat करने बोला खुद को. And I kept repeating until I started feeling it. And when I started feeling it, then I went into the character and I started doing that sketch. And the acting was so different from the time before when I did not do that. मैं सिर्फ script पढ़ रहा था. So I now realize that actors do this all the time. They have this internal monologue. Right. They have this line that goes on, and their behavior, their personality, their expressions, everything changes because they have that inner line. Why can't you use this in your everyday life, right? Suppose if you're going for a job or you're going for an interview and you say that, okay, I want to be a confident person. Now, there is a certain way of making that a reality for you, because you know how to be a confident person. You also know how to be a insecure person. How do you switch to the confident side? You have to create that belief in yourself. And because the brain is so capable of believing anything, you should use this technique. To actually keep reinforcing that and believe it. Yes. Now, what is the problem with this? You can only change your belief. You cannot change external things. So if you say that I'm somebody who has $1 million, you can believe in it, but it will not happen because you believe in it. Between your beliefs and reality, there is something called action. So if believing that you have $1 million helps you act in a way that makes you work harder, work smarter to get $1 million, great. But if you believe it so much that I already have $1 million, then you are in trouble. That belief
उसको एक्शन या अलाइंड एक्शन से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड आई थिंक व्हाट यू सेड इज हेल्प्स यू बिल्ड. I mean, what you said was very interesting when we started, right? कि success is equal to intelligence plus resilience. तो इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ये आपको रिजिलियंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और हर चीज़ हमारे को अल्टीमेटली रिजिलियंस क्रिएट करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. एब्सोल्युटली. और एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि हम लोग पूरे दिन में बहुत छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, जैसे आपने मुझे पूछा कॉफ़ी चाहिए कि नहीं, एंड आई सेड यस. नाउ सपोज इफ आई वाज डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड मेरे दिमाग में ये है कि नहीं, मुझे डाइट करना है बिकॉज आई वांट टू स्टे एट अ लो कैलोरी डाइट. अगर मैंने वो बहुत डीपली विजुअलाइज किया है खुद के लिए कि till 2 p.m. I will not eat anything, that decision would come very easily to me. Because I've already visualized myself not taking in any calories till 2 p.m. So that decision will be very simple. Coffee चाहिए नहीं चाहिए. But if I've left it open कि यार हाँ मुझे डाइट करना है बट देखते हैं कैसे कैसे होगा, तो when you ask me a question I'm like अरे चल ठीक है, ओके लेट्स गो, एक कुकी ले लेते हैं, राइट? अभी कुकी पड़ा है वहाँ पे, लेना है नहीं लेना है. सो दीज आर डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक ऑन अ सेकंड टू सेकंड बेसिस. तो अगर आपने प्रॉपरली प्लान किया है खुद के लिए कि मुझे क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू आई वांट टू बी, दोज डिसीजंस आर ऑलरेडी टेकन. दैट मेक्स लाइफ इजी. I mean, a lot of, if you study, so a lot of senior startup founders और senior people, वो काफ़ी decisions अपने pre-decided होते हैं. हम क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, हमारा डे का schedule क्या है. You're not making that on a day-to-day basis. Right. So, I think that ability to think positively, plan your day, pre-decide decisions gets you there. Yeah. Dr. Sid, I want to talk about one thing, जो I guess is probably one of the biggest issues facing our generation, in my humble opinion. And I think that is this idea of focus. Yeah. Right? हम एक attention economy में live करते हैं, जहाँ पे सब कोई हमारे attention के पीछे पड़े हुए हैं. From our phones to Netflix, every technology is being created to ask for more attention. And अगर कुछ भी टास्क करना है, शायद मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको फोकस देना या अपना अटेंशन देना. एंड आई फाइंड दैट सिवियरली ब्रोकन. सो व्हाट इज़ हैपनिंग विद आवर ब्रेन जो हमारे फोकस को इतना इम्पेयर कर रहे हैं. एंड हाउ, लाइक, आई मीन, लेट्स टॉक अबाउट फिक्सिंग इट लेटर, बट व्हाई इज़ आवर फोकस सो ब्रोकन? आप फोकस ऐसे सोच सकते हो कि एक कंप्यूटर स्क्रीन है और हर 8-9 सेकेंड्स वो रिफ्रेश होता है. ठीक है, दैट इज़ आवर अटेंशन. बेसिकली हर 8-9 सेकेंड्स आवर माइंड रिफ्रेशेस टू चेक कि इज देयर एनी डेंजर अराउंड अस. दैट इज द वे द ब्रेन इज वायर्ड. This is from the tribal survival instinct की, this hunting की, भैया are we okay, are we not okay? करेक्ट. एंड जितना ज़्यादा हमारा सेंस ऑफ थ्रेट हुआ उतना जल्दी रिफ्रेश होता है. तो अगर समझो आई एम इन अ बैटल जोन, आई विल बी रिफ्रेशिंग एवरी सेकेंड और एवरी 0.5 सेकेंड्स कि यहाँ से कुछ आ रहा है क्या, यहाँ से कुछ आ रहा है क्या. वेयर एज अगर मैं घर में हूँ, मेरे फैमिली है, हम सब खुश है, हंस रहे, आई माइट रिफ्रेश एवरी 30 सेकेंड्स जस्ट टू चेक कि कुछ प्रॉब्लम है क्या. बट नहीं, फ्लो स्टेट इज व्हेन आई एम नॉट रिफ्रेशिंग ओनली, आई एम जस्ट इन दैट जोन. मुझे कुछ पड़ी नहीं है दुनिया की, आई नो आई एम सेफ, मुझे यही करना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है. Flow state is a place where you are safe. Where you are safe, Beautiful. but you are also dialed in. You're focused on one thing, and you are not constantly checking is there something else I should be doing. Anxiety is the opposite of flow state. Okay. Anxiety is where you are only checking if there is some danger. और कुछ काम नहीं कर रहे हो. कुछ काम नहीं कर पा रहे, because as soon as you start to focus, it immediately zooms out again and checks कि कुछ है क्या. तो focus is like आप कैमरा लेंस सोच लेना कि आप एकदम जूम इन कर रहे हो कोई चीज़ पे, बट आप जैसे ही जूम इन करते हो आपका बाकी सब डार्क हो जाता है.
You are not able to look at everything else. You cannot zoom in if you think there is danger everywhere. Interesting. So the chemical in the brain that allows you to do this is something called noradrenaline. Okay. Non-adrenaline. Noradrenaline. Noradrenaline. That's the name. Okay. It's also called norepinephrine. So that's the more common name. अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े हुए तो NE लिखा रहता है सब जगह पे. NE इज द केमिकल जिससे हमारा फोकस होता है. तो अगर NE बहुत कम है, नॉरएपिनेफ्रिन बहुत कम है, तो मतलब आप बोर हो रहे हो, तो हमारा अटेंशन ऐसे ही भटक रहा है, कुछ भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है. अगर NE थोड़ा बढ़ रहा है तो मतलब अटेंशन धीरे धीरे फोकस हो रहा है. बट एक लिमिट के बाद अगर NE बढ़ते गया तो अटेंशन फोकस तो हो रहा है बट एक चीज़ पे नहीं. इट इज़ कॉन्स्टेंटली फ्लिकिंग कि ग्लास देख रहा हो, ये देख रहा हो, टीवी देख रहा हो. आई एम कॉन्स्टेंटली चेकिंग कि और कुछ है क्या, और कुछ है क्या. एंड इफ इट कीप्स इंक्रीजिंग दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू एंग्जाइटी. बढ़ते गया तो पैनिक अटैक. Wow. सो फोकस इज लाइक अ स्पेक्ट्रम. Wow. तो हमें वो NE का लेवल उस स्वीट स्पॉट पे मेंटेन करना है जहाँ पे हमें इंटरेस्ट है एक चीज़ पे बट बाकी सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है. That is why focus is so difficult because it is like we are trying to build a small island of focus inside an ocean of calmness. Wow. Right? That is what focus is. बाकी सब कुछ ब्लर हो गया बट एक चीज एकदम कॉन्ट्रास्ट में आप दिख रहा उसी है. पे आप अटेंशन पे कर पा रहे Yes. हो. Wow. Love makes it easy. Okay. When you're in love, you can only look at the person you have a crush on. And बाकी सब लोग का चेहरा ब्लर हो जाता है. तो जैसे ही सपोज you're a college student और एक लड़की you really have a crush on, जैसे ही तुम क्लासरूम में आ गए, there are 100 students. But you would. In 1 second, your eyes will find that one Person. girl's face. It doesn't take time because your brain has looked at everybody, and even though you're consciously not aware, your subconscious has picked up that one face, and your eyes will immediately उस go पे on. फोकस होके बाकी सब ब्लर हो सब जाए. blur हो गया. That is noradrenaline in its optimum, How beautiful. right? और फिर उसके बाद अगले 2 घंटे तक क्लासरूम में सब लोग कहीं पे भी जाए, इन योर ब्रेन यू ऑलवेज नो वेयर दैट वन गर्ल इज. मेंटली आप ट्रैक कर रहे हो, उधर गया, Track कर. उधर गए, ये किया, वो किया. अगर पार्टी हो, even if the party has 3 levels, 3 floors, you somehow still know कि ये दूसरे फ्लोर में ये इधर है. That is so true, Dr. Sid. You know? always know where they are because your brain is now locked into that person. So that is what noradrenaline does. That's what flow state does. But anxiety ruins this. In anxiety, you are locked onto too many things, so you're not able to focus on one thing. और ये जो मल्टी स्क्रीन और जो मल्टी क्या आप काम कर रहे हो और फिर आपका इधर आ रहा है, सो यू आर इंक्रीजिंग दिस Yeah. इनटू मल्टीपल प्लेसेस. Correct. Because अभी हमारे environment में everything, every gadget is trying to be that island. कि तुम हम पे देखो और सिर्फ Me, हमको ही like देखो. me. I want to be Yes. I want to be your girlfriend. I want to be your your girlfriend. Like that Yes. 20 people who want to be Every your. gadget wants to be your girlfriend, Wait. basically. So then, how do you fix this? You have to have the talk. You have to sit with each gadget and have the talk. That listen, it's not you, it's me. We can't be exclusive. We can't. We can't. I cannot commit to you because you're not good for me. So that this unfortunate story is that gadgets are not really good for you because you are not using them right. Right. You're using them as a distraction. You're not using them to grow. You're not really using them to improve your lives. So if you are in that sort of toxic relationship with your gadget, where you only turn towards it when something is wrong, then that relationship cannot work. Work. Right? So
in a more serious tone, the way out of it is actually to not only have the talk with that gadget, but actually commit to a task that you think is important. That is the actual solution. क्योंकि तुम ब्रेकअप करके भी क्या करोगे? If You need to be in a relationship that's working for you, right? Yes. Like, Yes. Otherwise, you'll be back yeah. in 2 days. into toxic when 10 और ले लेते हैं. In 2 days, you'll be back. Like, hey, are you up? You know. So you have to commit to one task in that moment. And when you do commit to a task, everything else just disappears automatically. So find the answer to focus, the answer to attention is finding a task that you truly believe deserves your attention. And then everything falls into place. I think, and I think this is a very interesting thing that you said. You commit to a task जिस पे that deserves your attention. I think हम ना बहुत बड़ी बड़ी to do list बना लेते हैं जिसमें हमें again and I'll take a segue into this एक ये hustle culture जो हम create करते हैं where we love being busy. राइट तो हमारे को हम ग्लैमराइज करते हैं कि हम सोए नहीं, हम इतना काम कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी बड़ी टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमारे को ये करना है, ये करना है, ये करना है. बट आई थिंक व्हाट यू सेड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि यार व्हाट डिजर्व्स योर अटेंशन. क्या आप 20 चीज़ें लिख सकते हो और क्या उसमें से आप 15 काट सकते हो एंड आप वो 5 डिसाइड कर सकते हो जो एक्चुअली मैं नहीं करूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं. Right. एंड कमिट टू दैट वर्सेस मे बी राइटिंग 20 एंड नॉट Doing any of it. Yeah, because a big to-do list is almost like a flex. कि देखो मुझे इतना कुछ है, I have so many things going on. So sometimes you want to add 3-4 more lists or 3-4 more things on that list just to feel like you want to justify feeling so busy. But very often that feeling of busyness is anxiety. इंटरेस्टिंग. So what is that feeling of busyness? Basically you feel like मेरे पास time नहीं है. But that feeling is very very similar to anxiety, which tells you कि तुम्हारे पास time नहीं है. So how do you know if you are actually busy or are you anxious? Anxious. And you're also addicted to that feeling of anxiety almost, right? कि if I'm not in that state तो कुछ गलत है. गलत है. So you want to add more things on that list so that now you can justify it कि हाँ भाई देखो बहुत कुछ है मेरे plate पे. The solution is actually 2 things. One is not to have more than 3 to 5 things in a day that you have to do. And number 2 is, as you write your to-do lists, in front of it, write down how much time do you think each task will take. That will give you a more granular approach, because sometimes one task is like a minute long, but it still occupies one slot in your to-do list, and it is given the same importance as something else that takes 45 minutes or 2 hours. Right. That doesn't make any sense. You are just feeling unnecessarily busy. So write down how much time do you think each task will take, and most things take less time than you think. I agree. वो बस procrastination and Correct. हमारी brain का करते हैं नहीं करते हैं, like लिख के कर दो is easier, faster. 2-3 questions here, and maybe these are myths, but I'd love for you to bust them or agree with them. It is said that we only use 10% of our brain. Yeah. Is that true? Can you use supplements? I was told by someone lately, lion's mane. Say I've started thinking amazingly. Ashwagandha, different forms of supplements. Yeah. So first question is, do we actually use 10% of our brain? Is it possible to use more of our brain? So no, that's not true. 10% of the brain thing is not true, because your brain will always use all the networks that is available to it, but the efficiency with which it is using the networks will keep improving as you grow. So one example that I have is like in your smartphone, the chips, right? Those chips have evolved over the last 20 years, and the size is actually going down, but the
power is going up. And at every generation of chip, that chip used all its power, right? It was using all its networks. But what is happening is in the smaller area, more and more networks are getting added. That is the brain. So your brain is evolving and it is becoming more complex as more and more networks start connecting with each other. So in a child, there are, suppose if there is 100, like say 100 billion neurons, and there are 1 trillion synapses. Synapses are when neurons connect. The complexity of those connections will keep evolving as the child grows. And so a lot of synapses get cut, more synapses get added, and how intricately those connections are, that will decide how intelligent that child is. So it's not about 10%. It's that उसी neurons के बीच का connection कितना complex हो रहा है, that is what decides it. And your resilience and is again to add to this, जब आप मुश्किल काम करते हैं Yeah. तो this synapse and this network becomes more dense. Certain networks will become more dense. So every time you have to do a hard task, there is a tug of war between your limbic system, which is your emotional brain, and your prefrontal cortex, which is your logical, rational brain. So if I want to do a hard task, my limbic system is telling me, छोड़ना, क्यों करना है? Why don't you go back to sleep? Right. And my prefrontal cortex is saying, no, this is important for me, but it is important for me after 6 months. So I have to go to the gym now so that I can get fit in 6 months. Right. My limbic system is saying, but right now, isn't the bed so comfortable? सो जाओ. सो जाओ. क्यों? अभी ठंड है. Get back into the blanket. So there is a tug of war. So every time I do that hard task, my prefrontal cortex gets stronger. So वो वाला network connection strong होता है. So the next time it gets a little easier for me to do a the hard task. It's an interesting plug जो मुझे यहाँ पे डालने का मन कर रहा है is do people who are rich या जो successful हैं क्या उनका you know what you're saying is delayed gratification कि अभी काम कर रहे हैं लेकिन gratification बाद में मिल रहा है. So the people who are rich are their brains wired differently from those who are not or successful, rich/successful? Did they get rich or were they born rich? Get rich. Get rich. Get rich. There's a मतलब difference. जो खुद बना है, हाँ. जो खुद rich बना है, जो खुद successful, you know, success achieve किया है. Yeah. So anyone who has done hard tasks in their lives, they know how to delay gratification. That is true. Because it's not easy to do hard things by Right. definition. Right. So everybody who has achieved anything which is difficult knows how to delay gratification. That does not mean that they will be successful in all aspects of their lives, because delaying gratification in one domain does not mean they can delay gratification in another domain. So, for example, somebody who's very, very good at studies, Right. they have the ability to delay gratification, sit in the library and पढ़ाई कर सकते हाँ, हैं. 16 घंटा पढ़ाई कर सकता है. But can they delay gratification when their college friends ask them कि अरे चल दारू पीने चलते हैं? And they might say अच्छा चलो चलते हैं. So it's not कि it is, if you learn it in one domain, सब जगह applicable. सब जगह, हाँ, मतलब आपको हर जगह पे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, because the brain needs to learn that same lesson again and again. But if you have done it in even one, that means you know how to do it. Right? So that's why it's so important for you to learn this skill when you're a kid. अभी समझ में आता है कि why should parents and teachers teach kids discipline? You know, discipline is not about because I told you have to do it. Right. No, discipline is about I know you want to take the easy way, but can you do it the hard way in order for your prefrontal cortex to get better? Interesting. So, I mean, you know what you're saying, Dr. Sid, is so interesting because, well, 2 weeks back, मेरा podcast था with Lucky Bish ji. He's one of the top snipers in the country. He's a, you know, RNG agent.
और उन्होंने एक चीज़ बोली, आई सेड, लकी जी, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है या क्या एक सिविलियन और एक आर्मी के इंडिविजुअल को सेपरेट करता है? एंड ही सेड दिस, ही इज़ लाइक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिसिप्लिन। बिकॉज एज एन आर्मी पर्सन मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरा मन कर रहा है नहीं कर रहा है। वो सुबह 5 बजे उठ के हमारे को एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। एंड अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो मतलब आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एंड इट्स अमेजिंग दैट यू आर, आई मीन, आई हैव अ न्यूरोलॉजिस्ट reinforcing the exact same thing कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इज़ this concept of discipline. Yeah. It ties back with what we spoke about dopamine and serotonin. Right. Because dopamine will take you on short-term trips. कि अच्छा इधर चलते हैं, 2-3 घंटे के लिए मज़ा आएगा. But उसके बाद क्या? There's no follow-up. Right. Discipline is doing the same thing so that you are going on a journey. Interesting. That's the only difference. आप कोई भी चीज़ करो, but अगर आप करते रहोगे तो उससे तुम डोपामिन से सेरोटोनिन की तरफ जा रहे हो, बिकॉज अभी वो चीज़ तुम्हारा आइडेंटिटी बन जाता है, तुम्हारा इंटरनल स्टोरी का हिस्सा बन जाता है. एंड डिसिप्लिन से, रिपीटेशन से कई चीज़ अनलॉक हो जाता है जो पहले के 2-3 अटेम्प्ट में नहीं खुलता. राइट? सो इफ आई रीड द सेम चैप्टर वंस वर्सेस आई रीड इट 10 times, 10th टाइम में मुझे ऐसा कुछ समझ में आएगा जो मेरे पहले के 9 अटेम्प्ट में मुझे समझ में नहीं आया. लेकिन वो 10th टाइम का समझने के लिए मुझे पहले का 9 times पढ़ना था. और मैं अगर पहले ही 1 या 2 या 3 बार में उसको अबैंडन कर देती तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगी ही नहीं. Correct. और पहुँचती नहीं हूँ. एंड देन आई एम स्टिल वंडरिंग कि यार वाई एम आई नॉट ग्रोइंग, मैं क्यों वो नहीं कर रही हूँ. एंड अगेन सो इंटरेस्टिंग, राइट? हम लोग सब एक शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, क्विक फिक्सेस में रुके रहते हैं. बट आई फील एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक आप इंटेलिजेंट, रिजिलियंस आप सबको करें, सिंपल चीज़ें बस बार बार रिपीट करें, इज़ अल्टीमेटली द वे कि आप. तो लाइफ का पॉइंट है कि आप ऐसा कुछ ढूंढो विच यू डोंट माइंड रिपीटिंग. दैट्स बेसिकली इट. तो जो बोलते हैं ना कि पैशन ढूंढना है, Right. क्यों पैशन ढूंढना है? अगर आपका डिसिप्लिन इतना अच्छा है कि बिना पैशन का भी आप एक चीज रोज कर पाओ तो करो. यू डोंट नीड टू फाइंड पैशन. पैशन इज ओनली टू मेक डिसिप्लिन ईजियर. That's the only reason. Because if you're passionate about it, it just becomes easier to do it again and again. Again and again. And आपका एक inherent brain को एक investment होता है कि मुझे इसमें better होना है. If you're passionate. If you're not passionate, जैसे there is suppose if there is an SBI employee, he's disciplined. रोज सुबह उठता है, काम पे जाता है, he's a bank manager, he goes to work, for 40 years he's worked and he does his job well, he comes back. But he's not passionate about it. There is no incentive for him to come up with some creative solution to solve banking. He's disciplined, but there's no passion. तो उसमें creativity नहीं आएगा. He will still achieve a lot of things. He'll find peace of mind and everything. But अगर आपको creativity unlock करना है तो आपको passion चाहिए. Because you need to feel कि मुझे इसमें कुछ नया करना That है. love, that passion it's what you said, right? I think the easiest way to achieve focus is love. Absolutely. Right? तो कहीं ना कहीं they're all connected कि आपकी वो पैशन होएगा, लव होएगा, आपकी क्रिएटिविटी आएगा, आपका फोकस आएगा, ग्रोथ आएगा. एंड एट सम लेवल आप इसको हैक भी कर सकते हो और यू कैन फॉलो अ पाथ एंड काइंड ऑफ लुक एट अनलॉकिंग इट. Divya, there are only 2 emotions. There's love and there's fear. Interesting. And so, and really, I think that's what you said is, in my head, I used to think ki the opposite of love is hate, but the opposite of love is In a way, it's fear because people say the opposite of love is indifference. And in a way, that's true. कि मुझे जो love मतलब क्या? Something is pulling me towards it. अगर अभी आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो. You can call it desire, you can call it lust, you can call it hunger, you can call it love. ये सब language का खेल है. But if something is pulling me, that is love. और उसमें फिर बहुत सारे nuances होता है कि वो इतना मुझे pull कर रहा है कि I start feeling कि that is a part of me now. That is love in its long term story.
And the opposite of that can be either push, कि something is pushing me away. That can be hate, that can be fear, that can be anger, और indifference, कि वो pull जो है वो cut off हो गया. there's nothing There's there. nothing. There's nothing. मुझे कुछ feel ही नहीं हो रहा है. Right. Dr. Sid, so for the last bit, I want to talk about, this device addiction, right? And I think I want to put on the hat of a mother of a 13-year-old. Like, I have grown up without devices. हम grow up किए with, Yes. dial-in phone, जहाँ पे devices were not a part of everyday life. लेकिन अगर आप आज की generation देखेंगे, Gen Z, the new kids, ये digital natives हैं, right? They've grown up with the phone. आप स्कूल में जाएंगे तो आपका आधा काम is going to be on technology, on laptops, on phone. So my question is कि how practical is it to be device free? Like there is this whole anti-device, how it's frying the brain, and I understand it's frying the brain. So my question is, how practical is it? Is it actually frying the brain? Are the future brains जो बन रही हैं more in tuned to this level of technology than शायद the earlier version of us and humans? Yeah. We don't know what is the long-term effect of phones on the brain because अभी effect चल रहा है. Yeah. We can only predict. Right. We can make a logical guess कि क्या हो सकता है. Now, the good news is that the brain can adapt to anything. Right? People are born in the worst of conditions and they still come out well. Right? Like people have been born in war-stricken areas. They've been born in prison. They've been born in Holocaust camps. जी. And they have survived, come out, been very successful people. The brain is incredibly resilient. So I don't think being born in a world with phones is the end of humanity. Like, that's not true. That's हो ही नहीं सकता. I believe in human beings. I believe in the brain. And its ability to evolve And its ability to adapt. Grow and become stronger, better. So to all the parents out there who are worried ki will phones destroy my child's brain, I would say don't worry. Your child's brain is very resilient. That being said, there are certain dangers of modern society, modern life, which we must address. Just like how 50 years ago, we all decided collectively कि हमें move नहीं करना है. We all decided that luxury and comfort means not moving. So we decided to have escalators, elevators, cars, taxis, trains. We decided to have maids and cooks if we can afford it so that हमें हिलना ही ना पड़े. So today a privileged person can go an entire day without walking even 100 steps. Right? Which is unbelievable to think about because 10,000 years ago, forget 10,000 years, 300 years ago, the average step count of a human being was around 30,000 steps. Wow. आज हम लोग 10,000 steps को गोल बना रहे हैं. Exactly. We are so excited कि मेरे 10,000 step हुए. Right? 20 to 30,000 was the average step count. क्योंकि करना क्या है? Of course, we have to move, right? Right. So, one of the problems that has happened because we have stopped moving is we are all getting metabolic syndrome. मतलब हमारा बॉडी का वो कैपेसिटी जो है फूड को डाइजेस्ट करके अच्छे से प्रोसेस करना वो चला गया है. सबको डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम के वजह से कैंसर हो रहा है. 40% ऑफ कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिकॉज बचपन से हमारा मूवमेंट जो है वो कम हो रहा है एंड हमारा डाइट वर्सन हो रहा है. समथिंग सिमिलर विल हैपन टू द ब्रेन बिकॉज ब्रेन का एक कैपेसिटी होता है सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग का, सीखने का. आई थिंक हमारा जो डिपेंडेंस हो रहा है फोन पे एंड नाउ विथ AI, Right. our ability to look at new information, learn that information and use it. What you said initially about the definition of intelligence. Exactly.
we are wired to be intelligent, just like we are wired to move. Because we are not moving, we are getting metabolic syndrome. Because we are now outsourcing intelligence, I think we will get the brain equivalent of metabolic syndrome. Wow. So our brains will start having those negative consequences because we are simply not using it. तो अगर आप फोन के साथ यूज करो ब्रेन को, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन द फोन बिकम्स जस्ट लाइक एनी अदर टूल. Right. पीपल हु आर सक्सेसफुल नो कि कार है, अच्छा है, बट आई स्टिल नीड टू वर्क आउट, Right. I still need to go to the gym. I need to work. I need eat to healthy, Right. consume good stuff. तो फोन होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट लाइक स्विगी होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, कार होना इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर आप भूल जाते हो कि दिस वॉज नॉट द पर्पस इज टू एक्चुअली गेट योर जॉब डन एंड टेक केयर ऑफ योर Right. बॉडी, Right. अगर आप वो भूल गए तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन दैट वी विल हैव अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स जो अभी तक आया ही नहीं है, हमने सोची ही नहीं है, देखी ही नहीं बिकॉज है. अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हमें सोचना ना पड़े. For the first time we are entering a phase, for the first time we are entering a phase of time where thinking is optional. That is incredible, Dr. Sid. I think what you just said कि with AI, with technology, हम actually ऐसे state पे पहुंच रहे हैं जहाँ सोचना optional हो रहा है हमारे लिए. Yeah. And हम उसको facilitate कर रहे हैं कि बिना सोचे we can get through our day and our life. Yeah. Wow. That is such an incredible thought. इतना powerful thought है of, I think from starting of intelligence क्या है Yeah. to this point where we are creating handicaps for ourselves That's a good कि word. हम सोचना बंद करते हैं. And I think that for me is probably the biggest realization of this conversation. Yeah. With. So how do we account for that? कैसे हम अपने आप को इससे protect करें? Don't leave thinking as an option. Just like moving is not an option, thinking is not an option. तो अगर आपको कोई चीज़ आपको टच कर रहा है, if you find yourself curious about something, listen to it and go after it. Learn as much as you can, and don't outsource the ultimate decision making to a gadget. Right. So सीखो, go out there and learn actively, just like how you work out in the gym. Keep learning as a conscious effort कि आज मुझे ये सीखना है. Nowadays people will go entire weeks without learning anything. Scrolling is not learning. 10 रील स्क्रॉल करो, 2 मिनट के बाद आपको एक भी याद नहीं रहेगा. मतलब आपने कंज्यूम बहुत किया है बट इफेक्ट कुछ नहीं हुआ है. इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ जंक फूड, right? There's no nutrition in there. So learn and then Podcasts, teach. books. Anything that you can integrate into your life. Learn so that your brain will keep working. That is probably the only way. It's beautiful. Unbelievable, Dr. Sid. I think what a conversation. I think from talking about कि intelligence क्या है, success के क्या metrics हैं, resilience, manifestation, creating focus, to ultimately for me, ये तो एक I think this is a golden nugget कि it is our jobs to keep thinking Yeah. and keep this beautiful brain alive that has got us so far. Absolutely. But thank you so much, Dr. Sid. This Thank you was for having me. fantastic. Thank you for having And me. look forward to lots and lots more conversations with you. Right?